Hello student, good morning. Myself Salim. I will teach you. The chapter is sources of energy. Chapter is sources of energy in physics. Today I explain sources of energy. But you should know what is energy. What is energy? What is energy? What is this energy? I am explaining. First heading is energy. Energy is the capacity for doing work. Energy is the capacity for doing work. Energy is the capacity for doing work. What is energy? Energy is the capacity. Energy is the capacity for doing work. Now, type of energy. Different types of energy. First, potential energy. Second, kinetic energy. And third, thermal energy. And fourth, electrical energy. And five, chemical energy. And six, nuclear energy. I repeat this: source of energy. Before, you should know what is energy. I am explaining this. First heading, energy. Energy is the capacity. Energy is the capacity for doing work. In the physics, the types of energy: potential energy, kinetic energy, thermal energy, electrical energy, chemical energy, nuclear energy. There are different types of energy. The energy is converted from one form to another form. The energy converted from one form to another form. Then note this. Now, next heading is sources of energy. Before I am explained in first heading what is energy. I repeat this: energy. Energy is the capacity. Energy is the capacity for doing work. It's called energy. Energy is not created. Energy can be not created. Energy can be converted one form to another form. Now, what is source of energy? Then you should know before what is energy and explain the energy, the capacity, the energy, the capacity of the energy. The energy is the capacity for doing work. Now, source of energy. A source of energy is that which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. Then it is a good source. Now, a source of energy is that which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. Now, what is source of energy? What is source of energy? A source of energy is that which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. Now, I am explaining the energy cannot be created, but it is converted one form to another form. But there are different types, there are different forms of energy. As like potential energy, kinetic energy, thermal energy, electrical energy.
nuclear energy. Then there are different form of energy. First, potential, kinetic, I'm explained before. Now there are different there are different form of energy. There are different form of energy. So there will be different source of energy according to form of energy. Then there are different form of energy. So there are different source of energy. There are different source of energy. There are different source of energy according to form of energy. Now energy can be converted. Energy can be converted from one form to another form, but energy cannot be created and destroyed. But it is converted one form to another form. Now I am repeat this source of energy. This source of energy is that the source of energy is that which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. Now, what is conservation of food? Now, there are different form of energy. There are different form of energy. So, there are different source of energy. There are different source of energy according to form of energy. There are different source of energy according to form of energy. You want to, what is this form of energy? I am explaining potential energy, kinetic energy, nuclear energy, electrical energy, thermal energy, heat energy. Now, energy can be converted from one form to another form. Now, look at both now. And need for source of energy. Need for source of energy. First, to make food, and second, to generate light, and third, for transportation, and four, to run machine, and five, for industry and agriculture. Need for sources of energy. Then, this is to make food. Need for source of energy. Now, to generate light by source of energy. For transportation, need for source of energy. To run machine, need for source of energy. Need for source of energy for industry and agriculture. I repeat, need for source of energy to make food, and second to generate light, and third for transportation, and fourth to run machine, and five for industry and agriculture. Now note this. Hello students, welcome to SGI online classes of chemistry. Today is the revision class of class 10 and the subject is chemistry, that is the revision video of fourth chapter, which is carbon and its compound. Students, in this chapter many important topics are remaining because these important topics are very important for the board examination. So here we have revised some questions which are important. So that is the first question: which of the following will give the addition reaction? Here are many organic compounds which are give the addition reaction. Why? So first one compound is C4H10. Students, C4H10, that is the example of alkane, because the general formula of alkane is CnH2n plus 2, where n is the number of carbon.
So here number of carbon is 4, C4. 4 2s are 8, 8 plus 2 is 10. C4H10. Number of carbon is 4, that is why you can say that is the formula of butane. C2H6, it is also a formula of alkane, but number of carbon is 2, that is why it is the formula of ethane. C2, 2 2s are 4, 4 plus 2 is 6, C4H6. So it is also example of alkane. Next one is C2H4. Students, C2H4 is the formula of alkene. Why? Because the general formula of alkene is CnH2. So here number of carbon is 2, C2. 2 2s are 4. So C2H4, which is the formula of ethene as well as ethylene. So that is the example of alkene. And next one is CH4. Student, here number of carbon is 1 and it is also a formula of alkane, CH4. Next one is C3H8. So student, C3H8 is also an example of alkane. Why? Because 3 2s are 6, 6 plus 2 is equal to 8. That is why C3H8 is also classified in the form of alkane. And next one and last one organic compound is C3H4, which is the formula of alkyne. How? Because the general formula of alkyne is CnH2n minus 2. Student, n is the number of carbon, so here number of carbon is 3, C3. 2 into 3 minus 2, so C3. 3 2s are 6, 6 minus 2 is equal to 4. So C3H4 is the formula of alkyne, and the general IUPAC name of this compound, because the parent alkane is 3, that is why it is propyne. That is, so these all organic compounds are classified in the form of alkane, in the form of alkene, and in the form of alkyne. So students, those type of compounds which consider double bond and triple bond, which gives the addition reaction, because these are the unsaturated compound and bond get break and converted into saturated product. So those type of organic compounds which are alkenes and alkynes give the addition reaction, because unsaturated compound get converted into saturated compound, and all type of alkene and alkynes are unsaturated compound. So alkanes, those type of compounds which are alkanes, don't give the addition reaction. So that is alkane, so it don't give addition reaction. It is also a type of alkane, don't give addition reaction. That is also a type of alkene, so it give addition reaction. It is type of alkane, don't give addition reaction. That is a compound of alkane, it also don't give addition reaction. And last one is the type of alkyne, so it give the addition reaction. I hope you are understood this question very well. Now start the next question. Students, the next question is about the conversion. So, how we can convert? So, first one problem is how we can convert ethene to ethanol. So, ethene to ethanol. First one, with the help of dehydration process. With the help of dehydration of ethanol, we get converted into ethanol to ethene. How? So that is the formula of ethanol, C2H5OH. If it is dehydrated, it means water
the dehydration reaction, water is also removed. For example, if you have to suffer just because of dehydration problem, so water is removed from our body. That is why we have to suffer from dehydration problem. Same to this reaction. Water is also removed from this reaction H2O. So here one hydrogen is removed. So C2H4 is considered C2H4. H from this side and OH from this side. So H2 is removed, reaction is balanced. This reaction is known as dehydration reaction, and that is the formula of ethene, and it is ethanol. The next conversion is how we can form propanoic acid to propanol. Propanoic acid to propanol. So students, how we can form propanoic acid to propanol? So firstly, what is the formula of propanol, students? So pro, it means number of carbon is 3, C3H7OH. That is the formula of propanol. That is the formula of propanol. You can also say that it is the formula of propyl alcohol. It can oxidize with nascent oxygen, so it forms propanoic acid, because in the oxidation reaction addition of oxygen is always happen. So addition of oxygen is happen, it means here is one oxygen considered, but when we form the product consider two oxygen. So which one is the functional group which consider two oxygen? That is the carboxylic group. So carboxylic group, that is COOH. Here is COOH. Here number of carbon is 3. That is the number of carbon is 1. So C2. And if number of carbon is 2, so hydrogen is 5. C2H5COOH. That is the formula of propanoic acid. That is the formula of propanoic acid, students. So now balance the chemical reaction. C3 2 1 3. Hydrogen 7 1 8 5 6. It means 2 oxygen, 2 hydrogen is remaining. So that is 2 hydrogen. Oxygen 2 oxygen. So that is the balanced chemical reaction, and this oxygen is known as nascent oxygen. So that's enough for today. Thank you. Have a nice day. Hello everyone, welcome in the online classes of Shivaji Group of Institutions. This class is for students of class 10 and the subject is biology. Today I am going to start a new chapter which is lesson reproduction. So first of all, let's discuss what is the word reproduction. The word reproduction consists of two words. Number first is re and number second is production. The word re means again and the production means to generate or produce. That means that reproduction is a process in which organisms produce again the same kind of themselves. Next thing, let's discuss about the definition of reproduction. So the reproduction is a process in which a living organism produce again a copy of its own kind. This is a special characteristic of living organisms. There is a great difference between living beings and non-living things. When we talk about living things, they cannot reproduce the carbon copy of their own kind. But living things can produce a living organism which is the same copy of its own kind. When we talk about different types of reproduction, so reproduction can be occurred by two processes. Number first, asexual, and number second is sexual. So when we talk about asexual, in this process only one individual can give birth.
That means the process was defined between not between male and female, but only one, by either it is male or either it is female, can generate a copy of its own kind. Next thing, when the process occur only by one individual, that means no gamete formation take place. That means no germ cells are formed in this process, and also no fertilization occurs in this process. Next thing, that new individual which are produced by the method of asexual reproduction are exactly similar to their parents. That means they are the carbon copy of their parents, and because they are the carbon copy of their parents, they are also known as clones. And now when we talk about sexual reproduction, it involves two individuals. That means the importance of male and female both is required for this process. And when two individuals are performing the sexual reproduction, both individuals produce specialized cells. These specialized cells are known as gametes, and therefore gametes undergo fertilization to produce new organism of their same kind. And the new individual is in this case not exactly the carbon copy of their parents, and such individual which is produced by sexual reproduction is known as hybrids. So students, मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है लेसन रिप्रोडक्शन, जो कि लास्ट चैप्टर आप लोग के 10th क्लास का बचा है. अगर हम रिप्रोडक्शन वर्ड की बात करें तो रिप्रोडक्शन वर्ड 2 वर्ड से कंबाइंड होकर बना है. नंबर फर्स्ट इज री. री का मतलब होता है अगेन, दोबारा से, एंड सेकंड थिंग इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मींस टू जनरेट और प्रोड्यूस. कोई चीज को जनरेट करना है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना. दैट मीन्स अगर हम रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग देखना चाहें तो रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग है अगेन रिप्रोड्यूस करना अपने ही सेम काइंड का. प्रोड्यूस अगेन द सेम काइंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग ही रिप्रोड्यूस होगा. अगर डॉग रिप्रोड्यूस कर रहा है तो डॉग से डॉग ही रिप्रोड्यूस होगा. कोई डॉग कैट को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या कोई कैट माउस को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. दैट मीन्स कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो जनरेशन हो रहा है, वो अगेन हो रहा है सेम काइंड का. जो ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अगेन अ कॉपी ऑफ इट्स ओन काइंड. सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये होता है ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उसमें कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड की अगर हम बात करें, दिस इज नॉन लिविंग थिंग. ये बोर्ड रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे एक और बोर्ड जनरेट नहीं कर सकता. या अगर मार्कर की बात करें, मार्कर रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे एक और मार्कर जनरेट नहीं कर सकता. बट अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ये सारे लोगों में रिप्रोडक्शन होता है. तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस अगेन. वो एक और बार से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. और रिप्रोड्यूस में आता क्या, अ कॉपी ऑफ इट्स ओन काइंड. उनके जैसा ही सेम कॉपी जनरेट होती है. रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स हो सकता है. वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है. जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे ओनली वन इंडिविजुअल कैन गिव बर्थ. हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स होते हैं, मेल्स एंड फीमेल. बट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दोनों का वहां पे प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं होता. कोई एक ऑर्गेनिज्म भी जो है वो ये रिप्रोड्यूस कर सकता है. और जब रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, वेदर इट इज मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, अगर एक ही जन पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है. नेक्स्ट थिंग, जब एक ही जन पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, स्पेशल सेल्स का सिक्रीशन नहीं होता और गैमीट फॉर्म नहीं होता. और जब गैमीट फॉर्म नहीं होता तो गैमीट से आगे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी यहाँ पे नहीं होता. और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे हमें मिलता है ये एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होता है अपने पेरेंट का. दैट मीन्स दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता. जब कार्बन कॉपी निकालते हैं, फोटो कॉपी निकालते हैं, तो हमें दोनों चीजें एकदम सेम मिलती हैं. हमें उसमें कोई भी डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते. सिमिलर थिंग यहाँ पे होती है कि यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हुआ है वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होता है अपने पेरेंट का. और क्योंकि ये कार्बन कॉपी होता है, दैट इज व्हाई इसको बोला जाता है क्लोन्स. अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे क्या होता है, 2 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है. दैट मीन्स यहाँ पे हमें मेल भी चाहिए
और साथ साथ हमें फीमेल भी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल की प्रेजेंस होती है तो दोनों इंडिविजुअल स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन स्पेशल सेल्स को बोलते हैं गैमीट। गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होके आते हैं। यहाँ पे जो हमें न्यू इंडिविजुअल मिले थे ये एग्जैक्टली सेम कॉपी थे अपने पेरेंट्स के, बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स के वो कार्बन कॉपी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में डिफरेंस होता है, एकदम सिमिलर बेबीज बॉर्न नहीं होते, उनके फेशियल चेंजेस होते हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कार्बन कॉपी हमें नहीं मिलता। बहुत सारे फीचर्स सिमिलर होते हैं, सिमिलैरिटीज होती है, बट कार्बन कॉपी यहाँ पे नहीं होता। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, इनको फिर हम हाइब्रिड्स कहते हैं। Good morning, students. Your literature part is completed, means to say that the chapters of reader and supplementary and poems, all the topics have been completed, and you have to secure your notes in your fair copy. As far as section B, means grammar portion, is concerned, you have revised the topic reordering. And next topic according to your board syllabus is conversion, means परिवर्तन, ट्रांसफर, एक दूसरे से चेंज करना, है ना। कन्वर्जन मीन्स होता है कन्वर्ट करना, कन्वर्जन कन्वर्ट से बना है, कन्वर्ट मीन्स एक से दूसरे में परिवर्तित करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ one sentence is going to be converted in second one? There are some kinds of sentences and you have to transfer the sentences from assertive into interrogative, assertive to negative, or assertive to exclamatory, etc. Okay. So first of all, you have to know the meaning of conversion. Okay, conversion means convert, change करना, transfer, एक से दूसरे sentence में transfer करना. And in the topic there are three subtopic. First of all, the change of sentence, the change of tense, and the change of voice. Okay, active person. So first topic today we are going to discuss, and that one is sentence. I think students, you are very well familiar with the definition of sentence. You know, once again I am going to revise. Sentence. What is sentence? Sentence is a group of words which have sequence of grammar and has complete sense. A group of words in grammatical sequence that has complete sense. ग्रामर का सीक्वेंस भी होना चाहिए, क्रम भी होना चाहिए, एंड उसका पूर्ण भाव, कंप्लीट मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, व्यक्त होनी चाहिए. दैट वन इज सेंटेंस. एज फार एज काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज कंसर्न, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, assertive, that is divided in 2 groups, affirmative and negative. Affirmative and negative. Second one is interrogative. Interrogative is also divided in 2 parts. First of all, interrogative, which start with the helping verb. Okay, interrogative with the auxiliary verb or helping verb. Okay, and next one, question statement, that is start with the WH word, just like who, what, why, whom, where, etc. And third one is imperative sentence, that start with the first form of the verb, have full stop in the end, and they express suggestion, command, negation, permission, possibility, etc. Okay, and next one is exclamatory sentence. Exclamatory sentence, they carry
marks of exclamation in the end or after the exclamatory word. Next and last one is optative. Optative sentence. Okay. Optative sentence. Once again, revise your kinds of sentence. First of all, assertive sentence. They are simple statement and they have full stop in their end. They are divided in two parts: affirmative and negative. Affirmative sentence that accept the facts and negative which denies the facts. ठीक है, जो कथन को स्वीकार करते हैं, जिनके आंसर हाँ में ना में हाँ में निकलते हैं, दे आर अफर्मेटिव. एंड निगेटिव सेंटेंस नॉट वाले, नेवर वाले, नो वाले सेंटेंस जिनका निगेटिव मीनिंग, नकारात्मक मीनिंग निकलता है. ओके, दे आल्सो कैरी full stop in their end. Interrogative, they ask question. They are also divided into two parts: interrogative and question statement. Interrogative sentences, they start with the helping verb or auxiliary verb. Helping verb or auxiliary verb, they are under the category of be form, do form, have form, and modal auxiliary verbs. Be form, you know, is am, are, was, were, and have form has, have, had. Okay, and do form do, does, did. Okay, and modal auxiliary verb, you know, should, would, can, may, might, ought to, etc. Question statement, they start with the WH word. Okay, WH, I already told you, what, why, where, whom, which, or how many or how much, they भी क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं और उनसे स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट भी क्वेश्चन होता है. ओके, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट, दे कैरी क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे इसमें फुल स्टॉप लगता है और इन में जो है वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है. इनका जो सीरियल होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होता है और इनमें सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब और फाइनली ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है. उसके बाद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो फर्स्ट प्लेस होती है वो क्वेश्चन वर्ड की होती है. आफ्टर दैट देयर हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड फाइनली वी पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य. लेकिन केवल आदेश ही शामिल नहीं होते. दे स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं and subject is always hidden in the sentence and they carry full stop in the end of the sentence and they express the suggestion, permission, advice, negation and advice etc. ठीक है, आदेश, सुझाव, परामर्श मतलब निषेध, मना करने वाले, डोंट वाले सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस आपके इम्पेरेटिव कैटेगरी में आते हैं. ओके, नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस and operative. Actually, operative sentence is also family member of exclamatory because both type of the sentence express sudden feeling of human mind. जो हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में जो अचानक से भावनाएं जन्म लेती है, जस्ट लाइक हैप्पीनेस, सॉरो, सरप्राइज, वंडर एक्सेट्रा, वो वर्ड, वो मीनिंग एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस and they carry marks of exclamation at the end of the sentence. But when the sentence start with the exclamatory word, just like exclamation word, just like alas, bravo, hurrah, hooray, etc. Ah, oh, oh, these are the exclamation word. And when the sentence start with the exclamation word, we put marks of exclamation just after the exclamation word. Exclamatory word के just बाद हम इस मार्क को रखते हैं. And the sentence when start with how or what और how से start होने वाले जो क्योंकि कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे कि what इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आता है, how क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आता है और एक्सक्लेमेटरी में भी आता है. How you are going to make a difference between them, कैसे डिफरेंस समझेंगे उन दोनों के बीच में. यहाँ पे जो आपका व्हाट और हाउ आएगा उसका एक प्रॉपर आंसर पार्ट होगा, है ना. हाउ कैसे, उस कैसे को आंसर इलस्ट्रेट करता है, व्हाट को इलस्ट्रेट करता है, पूरा डिटेल में बताता है. यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन है व्हाट और हाउ, दे आर सिंबल ऑफ सरप्राइज. उसका कोई आंसर पार्ट नहीं होता, जस्ट
सरप्राइज, है ना, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज। अब आप नहीं बता सकते कि कितनी सुंदर है, कम है, ज़्यादा है, अच्छी है वगैरह, नहीं एक्सप्रेस, आंसर पार्ट नहीं एक्सप्रेस कर सकते। ओके, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। एंड फाइनली ऑपरेटिव सेंटेंस, आई टोल्ड यू दिस इज वन इज आल्सो फैमिली मेंबर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, and they also express sentence, operative sentence, they also express certain feeling of human heart, but the category is different. They express blessings and curses. जो हमारी विशेष हैं, ब्लेसिंग्स हैं, हमको एक्सप्रेस करते हैं, और जो कर्सेस हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। आप कह सकते हैं एक तरीके से ये फीलिंग का डिवीजन है कि शुद्ध आशय सारी चीज़ें जो है एक्सक्लेमेटरी में आती हैं, और ब्लेसिंग्स कर्सेस विशेष जो है वो आपका ऑपरेटिव में आता है, जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, and wishes God bless you, may God bless you, live long, etc. Okay? They also carry marks of excellence. Operative sentence क्योंकि इनका family member है, that's why they carry marks of exclamation in the end of the sentence. Good. Okay, student. So this one is kinds of sentence. Now, what is your work? According to your board syllabus, you have to transfer, you have to convert the sentence affirmative into negative. You can say negative or affirmative. जब हम एक एस्पेक्ट को दूसरे में चेंज करते हैं तो दूसरा वाला ऑलरेडी फर्स्ट वाले को इंडिकेशन देता है। तो अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव बनाना, एंड फाइनली असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना। Okay, just you see that imperative sentence and operative sentence, they are not going to be changed. उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा। हमारे 3 स्टेप्स क्लियर हुए। कौन कौन से? पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव, इनका आपस में ट्रांसफर। सेकंड पार्ट में असर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, एंड फाइनली फ्रॉम असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी एंड और एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव। तो 3 स्टेप हो गए। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाना। ओके, फाइनली व्हेन यू आर गोइंग टू फाइनलाइज द गिवन स्टेटमेंट इज असर्टिव, जब आप पहचान गए कि सेंटेंस असर्टिव है तो उसमें आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बट अभी इन दोनों को आपस में ट्रांसफर करना सीखना है। वेरी सिंपल। इसमें आपको 2 फैक्टर माइंड में रखने हैं। कौन से? अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, अभी मैं बताती हूँ। बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म एंड मॉडल, मोडाल्स। Modal auxiliary verbs and modals. B form means is, am, are, was, were. Okay, ये आपके जब मेन वर्ब से पहले आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, और डायरेक्ट यूज होते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो बी फॉर्म यानी is, am, are, was, were सेंटेंस में दिया है तो उसके जस्ट बगल में आपको नॉट रखना है। निगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट वर्ड यूज करना है। ऐसे ही आपका हैज़ हैव हैड है तो हैज़ हैव फॉर्म में हैज़ हैव हैड आता है, तो यू हैव टू पुट नॉट आफ्टर हैज़ हैड। ठीक है। डू फॉर्म में क्या होता है? डू, डज, डिड, ये आपकी हेल्पिंग फॉर्म है। एंड व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यू हैव टू पुट द वर्ड नॉट आफ्टर डू, आफ्टर डज और डिड। डू, डज या डिड के बाद हमें नॉट वर्ड प्लेस करना है निगेटिव बनाने के लिए। एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपके जितने भी आते हैं, कैन है तो कैन नॉट, मे नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट। ठीक है। जस्ट वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट समटाइम इन टेंस एंड आउट ऑफ टेंस यू गेट मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब ना। आप कभी कभी टेंस देखिए, उसमें आपको एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है क्रिया मिलती है। सपोज जब आपका सेंटेंस परफेक्ट टेंस में आता है तो आप क्या पाते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है तो आप क्या पाते हैं? हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो आपको विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है दे कैरी मोर देन वन वर्ड। ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, जैसे विल हैव बीन में 3 वर्ड आ गए,
है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में आपके दो हेल्पिंग वर्ब आ गए। तो जब आपके पास दो या उससे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होंगे तो यू हैव टू पुट नॉट ओनली जस्ट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। आपको फर्स्ट जैसे विल हैव बीन है तो आपका नॉट किस जगह प्लेस करेगा, यहाँ पे विल के बाद, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैम ने तो बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है, तो जब ये तीनों वर्ड आ जाएंगे मैं उसके बाद जो है नॉट वर्ड रखूँगा। ठीक है, तो मेक इट क्लियर दैट यू हैव टू पुट नॉट जस्ट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। ओके, इज एम आर सिंगल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू डज सिंगल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ पर आपको मोर देन टू मिलते हैं, मोर देन वन मिलता है, तो यू हैव टू पुट not just after first helping. Okay, clear? And next important thing that sometimes there is no use of helping verb. ठीक है, डायरेक्ट आपके मेन वर्ब के बाद ही आपको निगेटिव बनाना होता है, नेवर बनाना होता है। नॉट ये निगेटिव आप कैसे बनाते हैं, नेवर से, जैसे नेवर वाले में सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इनमें हम कभी कभी जो हु वाले आ जाते हैं, हु वाले क्वेश्चन वर्ड हैं, है ना, इनमें हम डायरेक्ट आपका मेन वर्ब के बाद ही नॉट यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से इनमें अलग से आपको हेल्पिंग वर्ब रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हु डिड इट, ये किसने किया। ठीक है, तो हु, इसमें तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, हु डिड नॉट डू इट, इसको किसने नहीं किया, हु डिड नॉट डू इट। ठीक है, नेवर वाले सेंटेंस भी होते हैं। नेवर वाले में आपका जैसे डायरेक्ट आप नेवर वर्ड रखते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ही नेवर एक्सेप्टेड हिज पार्ट, उसने कभी भी अपनी पार्ट, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं की। ही नेवर एक्सेप्टेड हिज पार्ट, यहाँ पे आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने डायरेक्टली नेवर वर्ड जो है वो उसके मेन वर्ब के पहले यूज की, नेवर एक्सेप्टेड। ठीक है, नेवर आपको ने कहाँ लगा है, मेन वर्ब के पहले, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब की नीड आपको नहीं। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड विथ नेगेटिव सेंटेंस इज दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। आप कहेंगे नो वर्ड जो है वो भी नेगेटिव बनाता है, नेवर भी नेगेटिव बनाता है, नॉट भी नेगेटिव बनाता है, टिल भी नेगेटिव बनाता है। तो नो वर्ड नाउन के पहले यूज करते हैं। आई हैव नो, मेरे पास कोई किताब है, बुक इज नाउन। अब यहाँ नाउन के पहले जब आप रख रहे हैं तो आप नॉट वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नो लगाना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नो एंड ठीक। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू रिलेटेड विद योर assertive sentence. They have been divided in affirmative or negative sentences. I think that one is sufficient for today, and you have to do exercise from your new style, that the book that one is prescribed to you, page 131, and exercise is 13.13. Sentence 50 sentences are given in the exercise, and you have to change this one. No, sorry, this one is interrogative sentences. Yeah, on page 125, exercise 13 and 13.1 and 13.2, they are given for transfer the negative sentence. Okay, change the following sentences into negative. You have to do in your exercise copy, and in our next video, I will tell answers and you have to tell them. Okay, student, fine. That's enough for today. Okay, done. Good morning class. Today we have learned the topic file handling in C programming. In C programming there are many things, and you know with the use of C programming we can make many types of programs and softwares. In C programming there is a lot of files which is in the form of text files and binary files. We can manage text files and binary files
in our C programming. For managing text files and binary files, we use some terms and some things. Firstly, we understand what is file. In computer, you know there is two types of memory. The first memory is RAM and the second memory is ROM, and all the data which is stored in secondary storage in the form of files. So we can say file is a container where we can store our data. If there is no file, then our data also stored, but if we want to search that data, there is much difficulty to search that data. So for searching data easily, we use the concept of files. Files is a container, means memory locations which are given to a specific name, and we can store data in that portion. So you also know that in our computer we can also create folders where we can store or put our files and easily search our files from that folder. So why files are needed? Files are needed to preserve your data even program terminates. When we run a program, then data exists. But after, when we use that program, then you know your data. But after execution, the data is stored in secondary storage, and we preserve our data. Secondary storage easily access the content of a file with the help of our system. So there are easily managed files in our computer system. Types of files. There are two types of file: text files and binary files. You know there are softwares like Notepad where we can easily typing our data and storing our data. In MS Word, MS Office is also used to create text files, and we store text files in our system. So the extension of text files is .txt. Extension of text files is .txt. We can easily search our text file because every text file has a name, and when you store that file, then you see the location where file exists. If you want to search file, there is an option of search in your computer, and you can easily search that files because that files have the extension .txt, and you can search all txt files with the help of txt extension. After that, you know binary files. Binary files are those files. Firstly, you know what is binary numbers. Binary numbers are those numbers which are in the form of 0 and 1. So these numbers are known as binary numbers, and we can also store our data in our computer in binary files. Why? Because in binary files the data is stored in the form of zeros and 1. So for the security reason, these files are much better than text files because no one can understand these files data easily. So you can store your files in the form of binary files. The extension of binary file is .bin. The extension of binary files is .bin. So in your computer you can store the C programming files, or you can manage the C programming files in two forms. The first form is text file and the second form is binary files. So you can understand how we use the concept of files, file handling in our C programming.
you see there are a lot of functions like fprintf, fscanf, fread and fwrite. These functions also work on the file. To if we want to print something in the file, then we use fprintf. If you want to print any message in the file, then you use fprintf. Generally we use printf in our programming, but in the case of file, we use fprintf to print any message or any text. The second one is fscanf. If we want to scan any value in our files, then we use fscanf function, and fscanf function scans the data in a file. The next one is fread. If you want to read any text or message or any data, then you use fread. F means file, read means in file we read with the help of fread function. The next function is fwrite, means if you want to return anything in our file, then you use fwrite. With the help of fwrite, we can return any message or any text in our file. So you can understand how we create a file, and the files are having two types, the text files and binary files. The extension of text files is .txt and the extension of binary files is .bin. And after that you understand which type of operation we can do in file handling in C programming. So there are 4 types of file operation which we can use in our files. Firstly, the first is create a new file. If we want to create a new file, then we use fp, means a pointer, that is fp, the pointer fp equal to fopen file name dot txt. Then we return the mode. The mode is read, write and execute. So if we return R, then this mode is called read mode. Opening the existing file. If we want to open, then fp equal to fopen file name dot txt, and if we want to open in read mode, then we return R. If we want to return in write mode, then we return W. If we want to return in append mode, then we return A. Closing a file. If we want to close a file, then we use close function to close a file. Reading, writing information to a file. If we want to read and write information in a file, then we use lot of modes. That is, the first mode is R. R means we open the file in read mode. RB means we open the file in read mode, but the file is binary mode. The file is binary, and so RB means we open a binary file in read mode. We open a binary file in read mode. Then W is write. WB means open a binary file in write mode. B means binary file. Then we use append if we want to add some text or some data in our file. Then we use A for adding the data, means modifying the data. AB means that append operation in the binary file. R plus means read and write both. Read and write both. If we want to read the file, then we use R plus. If we want to read and write both, then we use R plus, read and write. If we want to both the operation in same time, then we use read and write. Then the next is RB plus. RB plus means read and write in binary file. Read and write in binary file. So these are the options which are used to do the operations in files. So now we understand what is the concept of file. Firstly, you understand what is a file. File is a container
in our computer storage device where we can store our data, and that stored data have a name, and that if we know that name, then we access all the data, and these data are stored in the form of file. Then why file are needed? Because preserve our data even program terminates. If a program terminates, after that if we want to use that data again and again, then this data is stored in the form of file. We can use this data very easy manner because this data is stored in the files. Easily access the content of the file. If we want to access the content, because you know the computer memory is very vast, so there are a lot of data, and to search the data is a work. So if the data in the form of file, then we can easily understand where our data exists, and then we retrieve our data from that file. Then you know, if we want to take our data from one computer to another computer, then firstly we search our file with the help of file name and with the help of its extension. Then we can copy paste or cut paste our file to use the file in other computer or any other computer. So there are two types of file: text files and binary files. The extension of text files is .txt. Text files is written in English language or any other language. So these files are simple files. We can create these files with the help of Notepad and Word, and these files have less security than binary files. Binary files are those files where data in the form of zeros and one, so data is more secure in comparison to text files, and no one can easily understand these data, so these data is secure for user. File operations, there are 4 file operations: creating a new file, opening the existing file, closing a file, and read write information to a file. For operation read write information to a file, we use fprintf, fscanf, fread and fwrite functions, and there are different modes, that is read. RB means read in binary files, W means write in text files, WB means write in binary files. So there are many options which we use in file operation in C. In next turn we can understand how we create a new file, how we open the existing file, how we closing a file. Thank you class. So in next turn we can understand other things.